Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the upper limb anatomy. We know that with the start of first year, we'll be having certain lectures on the upper limb, lower limb, thorax, etc. So today we'll be starting the upper limb, and with respect to upper limb, we'll be studying the bones, the muscles, the blood vessels, nerves, etc. So the upper limb, in our upper limb anatomy, we should be knowing about the pectoral girdle. Now, what is the pectoral girdle? It is basically a framework of bones which connects the appendicular skeleton with the axial skeleton. So I'm sorry, I did the wrong thing. With the axial skeleton with the appendicular skeleton, right? So basically, the appendicular skeleton is consisting of the arm and forearm bones, while the axial skeleton is consisting of the midline bones, that is the sternum and etc. So the pectoral girdle will be consisting of two main bones, the clavicle and the scapula. So these two bones, clavicle and scapula, will be constituting the pectoral girdle, which connects the axial skeleton with the appendicular skeleton. Now, we'll be studying about the anatomy of these two bones. First of all, the first one is the clavicle, which is the only long bone which is placed horizontally. It is membranous in its ossification, and it has no medullary cavity, etc. So it is quite unique in its features, right? So it has got three parts: shaft, medial end, and a lateral end, right? So let's take a look at the features of each of these parts. So first one is the shaft, lying in the middle, and the shaft is basically, you can see, it is convex anteriorly in its medial 2/3, while it's convex posteriorly in its lateral 1/3. So, by this we'll be identifying it from the right to the right one from the left one, right? So we'll be seeing that a smaller head or a smaller sternal head is present medially, while a larger or a quadrangular shaped head is present laterally. It is also called as acromial head. Why? Because it is coming in contact with the acromion process of the scapula to form the acromioclavicular joint, while the sternal head will be coming in contact with the manubrium sterna to form the sternoclavicular joint, right? So in addition to that, these are the main features of the clavicle bone, और हम इसी तरह से इसको identify करेंगे, the right one from the left one. Okay. सो यस, सो मीडियली होगा स्टर्नल हेड जो कि स्मॉलर है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे मीडियल और लेटरल कौन सा है. अगर अपर एंड लोअर का आइडेंटिफाई करना है, तो ऑन द लोअर एस्पेक्ट ऑफ क्लाविकल विल फाइंड इन द सबक्लेवियन ग्रूव. सो व्हेनेवर देयर विल बी सबक्लेवियन ग्रूव, वो उसकी इंफीरियर एस्पेक्ट होगी क्लाविकल की. ओके, सो ये तो बातें हो गई. देन लेट्स टेक अ लुक एट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द शाफ्ट. सो शाफ्ट पे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज द कॉनॉइड टुबर्कल, जो कि बेसिकली प्रेजेंट होता है ऑन द लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट, एंड देयर विल बी अ ट्रेपेजोइड रिज और द ट्रेपेजोइड लाइन, जो कि अगेन प्रेजेंट होती है ऑन द लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट. इन एडिशन that on the middle 2/3 inferior aspect will be having a groove called as a subclavian groove, जहाँ पे आके subclavius muscle attach होते हैं. So these three features are the important aspects of the shaft of the clavicle. Okay, then the head, the sternal head is a smaller one, right? It's quadrangular in shape, and it's coming in contact with the sternum on its manubrium sterni and on the first costal cartilage, that is the cartilage of the first rib. And on lateral aspect there is a quadrangular, or you can say a small facet, तो small लेकिन काफ़ी expanded सा ये end है, and that is coming in contact with the acromion process of scapula to form the acromioclavicular joint. Okay, so these are the only important features of the clavicle bone. Let's just jump to the scapula. So scapula is also called as shoulder blade, and is forming the, you can say, the posterior aspect of the thoracic cavity, the thoracic cage, and we'll be studying its important features. So अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो राइट वन फ्रॉम द लेफ्ट वन, तो आप कैसे करोगे? देयर विल ऑलवेज बी a smooth or a straight medial end. Okay, so the medial end of the scapula will always be smooth and straight, while the lateral one will be having a fossa in it, the glenoid fossa or the glenoid cavity, which is coming in contact with the head of the humerus to form the glenohumeral joint, or simply the shoulder joint. Okay, in addition to that, there are also some peculiar features of scapula. We are having a beak shaped process called as a coracoid process, and that is a part of the lateral edge of the scapula, और हम इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये उसका लेटरल पार्ट है, तो उस हिसाब से उसकी लेफ्ट राइट साइड को आइडेंटिफाई कर सकेंगे. सो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया ग्लीनोड कैविटी, सेकंड वन इज द coracoid process, the third one is the acromion process. Okay, so the acromion process is basically extension of the spine of scapula. अच्छा, मैंने एक बात बताई नहीं कि अगर हमने वेंट्रल को डोर्सल से सेपरेट आउट करना हो तो आप कैसे करोगे? सो द वेंट्रल aspect of the scapula is quite smooth, and it has a single fossa called as a subscapular fossa. इसकी ventral aspect है, while the dorsal aspect is basically consisting of a huge spine called as spine of scapula, and above the spine we have a supraspinous fossa, and below it we have a infraspinous fossa. तो अगर ये पार्ट आएगा हमें नजर, तो ये कौन सी एस्पेक्ट होगी? उसकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट होगी स्कैपुला को. अगर हमें सिंपल एक सिंगल फोसा नजर आएगा, दैट विल बी द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ और द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला, राइट. तो एक हो गया हमारे पास ग्लीनोड, वो कोराकोइड प्रोसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं. द सेकंड वन इज एक्रोमियन प्रोसेस, जो कि कंटिन्यूएशन है किसकी? स्पाइन ऑफ स्कैपुला.
स्कैपुला की, और यहाँ पर लाई कर रही होती है रूट ऑफ स्कैपुला जो कि सुप्रास्पिनस और इन्फ्रास्पिनस कंपार्टमेंट्स को यू कैन से इन अ वे जॉइन कर रही होती है, और यहीं से ओरिजिन हो रहा था स्पाइन ऑफ स्कैपुला का. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्कैपुला बोन. एंड बस हमें ये पता होना चाहिए एक्रोमिन प्रोसेस, कोरोकोड प्रोसेस, सुप्रास्पिनस, इन्फ्रास्पिनस, स्पाइन ऑफ स्कैपुला एंड ग्लीनोड फोसा. अच्छा एक और चीज़, ग्लीनोड फोसा के अबव और बिलो हमें दो ट्यूबरकल्स या दो एलिवेशन नजर आते हैं, दैट इज द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल एंड इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, जिसके साथ अगेन आकर हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल ने अटैच होना है. सो इन दिस वे देयर सीन द सुप्राग्लिनोइड एंड द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑन द ग्लिनोइड फोसा ऑफ द स्कैपुला, राइट. अच्छा ट्यूबरकल्स हमेशा किसी किसी एलिवेशन को कहते हैं, रिज किसी एलोंगेटेड सी एलिवेशन को कहते हैं, फोसा हमेशा किसी डिप्रेशन को कहते हैं, राइट. और बस अभी ये चीज़ हमें बतानी चाहिए. सो विद दिस नोट वी आर डन विद. अच्छा एक और चीज़, एटाविस्टिक एपिफिसिस एक टर्म यूज़ होती है. हमें पता है जब कोई बोन डेवलप होती है जो उसका मिड शाफ्ट वाला पोर्शन होता है तो हम डायफिसिस कहते हैं, और जो उसका हेड का पोर्शन होता है तो हम एपिफिसिस कहते हैं. दोनों चीज़ें मीट करें तो हम मेटाफिसिस कहते हैं. अच्छा कहा जाता है कि कई बार एब्नोलॉजिकली कुछ बोन्स इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस होती हैं, जबकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मेन बोन का फ्यूज कर जाती हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफिसिस, राइट. एंड द कोराकोड प्रोसेस स्कैपुला जो हम पीछे देख कर आए विच वाज द बीक शेप्ड प्रोसेस, वो भी एक एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफिसिस, बिकॉज इंडिपेंडेंटली वो प्रोड्यूस होती है बट लेटर ऑन वो ज्वाइन कर जाती है विद द मेन बोन टू फॉर्म वन सिंगल बोन, राइट. सो सच टाइप ऑफ एपिफिसिस जो कि बाद में ज्वाइन कर जाएं परमानेंटली, उनको हम कहते हैं एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफिसिस, जो पहले इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस हो बट लेटर ऑन ज्वाइन कर जाएं. सो विद दिस नोट वी आर बेसिकली डन विद एवरीथिंग, एंड थैंक यू सो मच. इफ इट वाज हेल्पफुल फॉर यू देन लाइक, सब्सक्राइब द चैनल. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.